हेलो गाइस, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ डे 2। अभी हम लोग किष्किंधा से विजय विठला टेम्पल जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग अ शॉर्ट बोट राइड विच इज अबाउट 50 to 80 मीटर्स शायद। दिस इज द बोट दैट वी आर टेकिंग। और इस बोट पे बैठने से पहले ऑलमोस्ट एक कांड होने वाला था। इन भाई साहब ने बोला कि हम लोग बाइक इसके ऊपर चढ़ा के जा सकते हैं उस साइड तक। एंड हमारे एक कजिन ने he actually loaded the bike on the boat and after looking at the boat we decided like नहीं, हाँ ऐसे ही लेके जाने के लिए बोल रहे थे, but we decided to not to take a bike। हम लोगों ने बाइक बाहर ही पार्क किया and we sat in the boat and we are going on the other side now। तो वो वाला वीडियो आप एंड में देख सकते हो। A little bit about the place that we are going to see now. The Vijaya Vitthala Temple was actually built by the King Devaraya II in 15th century, and the other part around the temple was actually constructed by Krishna Devaraya in 1500. And Krishna Devaraya is one of the famous rulers of Vijayanagara dynasty. तो इधर से आप जहाँ बस सब देख रहे हैं ना, you can actually park your car there and from there you have to take a electric buggy which we are riding now for a nominal fees of 10 or 20 rupees per head, I guess. I'm not pretty sure about it. या आप चल के भी जा सकते हो, which is about 2 kilometers walk, wherein it will take bit more time to reach there. अभी हम लोग विजय विठला टेम्पल एंटर कर रहे हैं। दिस इज द मेन गेट ऑफ द टेम्पल। As soon as you enter the premises, you could see a Tulsi at the entrance, and उसके बाद the very famous known architecture of a stone chariot, which you can also see printed on 50 rupees note, I guess। जो नया वाला जो नोट है उसमें देख सकते हो आप। And the next building that you could see is basically Vijay Vitthala Temple जाने से पहले वाला portion, wherein they also say that all these pillars has a different sound. They make a different sound if you hit or if you hit on those pillars, they make a different sound। इसीलिए अंदर जाने के लिए allowed नहीं है अभी। Now we are entering the main complex of the temple. This is where the idol of Vijaya Vitthala had been kept earlier, and now it has been moved to a place called Pandrapura. This is a sanctum of a temple जहाँ पे आइडल्स को रखा गया था अर्लियर। अभी सिर्फ बेस है जो आइडल रखे। दिस इज द बेस वेयर इन द आइडल्स हैड बीन केप्ट।
ये जो स्टोन कार्विंग्स आप देख रहे हो, इसमें दो तरह का एनिमल्स है. इफ यू हाइड द राइट साइड ऑफ द कार्विंग, यू कैन सी द बुल, एंड इफ यू हाइड द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्विंग, यू कैन सी द एलिफेंट. इसी तरह का मैजिकल कार्विंग्स आप बहुत जगह पे देख सकते हो टेम्पल पे. ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं. इसके बाद हम लोग रूम पे गए, वी रिलैक्स्ड अ बिट, and later in the evening we chilled with our friends for a bit. And before I forget, I want to thank all my friends from Gangavati who helped us and showed us around Hampi. A special thanks to Karnakar, Mustaq Ali, Shanta Gowda and Raghu. So for whatsoever reason, if you have enjoyed this video, please like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care and have a good time.